Hello, good morning, friends. So, we are going to study today corporates and other laws for Inter Group 1 CA. And the first chapter is Indian Contract Act 1872, Unit 1, Contract of Indemnity and Guarantee. So, let's start without any delay. Firstly, we should see unit overview. So first is contract of indemnity and guarantee. Contract of indemnity and guarantee covered section 124 to 147. So, contract of indemnity and guarantee are the specific types of contracts given under section 124 to 147 of Indian Contract Act 1872 along with the specific provisions. Okay? So the general principles of contracts are also applicable to some specific contracts. Both contracts are mode of compensation based on certain similar principles. However, both differ from each other on several issues. As we know, indemnity and guarantee both are mode of compensation, but they are differ from each other on several matters. Okay, so first let's begin with the contract of indemnity. What we do understand with the contract of indemnity. Before understanding the contract of indemnity, we should learn about the meaning and the term indemnity mean. Actually, indemnity means to make the good or loss to compensate the party who has suffered some loss. इंडेमनिटी टर्म्स का मीनिंग है हमको उस जो भी पार्टी को लॉस हुआ है उसको या तो कॉम्पनसेट करने के लिए, जो भी लॉस है उसको कवर करने के लिए, और जो भी पार्टी सफ़र हुई है उसको कॉम्पनसेट करने के लिए. दैट मीन्स इन व्हाट डज इट इंडेमनिटी टर्म मीन्स. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज contract of indemnity? Contract of indemnity is defined under section 124 of Indian Contract Act 1872. Contract of indemnity किस sections में defined है? Section 124 of Indian Contract Act 1872. Where what is mentioned? What is the definition? Let's read. A contract by which one party promises to save other from loss caused to him. एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू विच वन पार्टी, जिससे एक पार्टी प्रॉमिस करती है दूसरी पार्टी से उसको लॉस से सेव करने के लिए, जो भी उसको लॉस हुआ है उसको सेव करने के लिए उससे, या तो बाय द कंडक्ट ऑफ प्रॉमिसर, जो भी प्रॉमिसर करेगा, और बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन, या किसी और पर्सन के द्वारा उसको compensate करेंगे. Okay, so let's take the example of contract of indemnity. Mr. X with the government to return to India after completing his studies at University of Cambridge and serve the government for a period of 5 years. If Mr. X fails to return to India, he will have to reimburse the government. It is a contract of indemnity. So here what is mentioned? Mr. X एक पर्सन थे जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया गवर्नमेंट के साथ कि he will return to India after completing his studies. Whatever the course he joined in University of Cambridge, he promised to government of India that he will return after completing his studies and serve the government for a period of 5 years. और गवर्नमेंट को सर्व करेंगे फॉर अ पीरियड, कितने टेन्योर के लिए? 5 years के लिए. इफ मिस्टर एक्स फेल टू रिटर्न टू इंडिया, अगर मिस्टर एक्स जो पर्सन है वो फेल हो गए भारत आने में, देन व्हाट वुड बी हैपन? ही विल हैव टू रीइंबर्स द गवर्नमेंट. उनको गवर्नमेंट को कॉम्पनसेट करना पड़ेगा. इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. ये क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. देयर आर टू पार्टीज इन द फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज होती हैं. द पार्टी हु प्रोमिसेस टू इंडेमनीफाई सेव द अदर पार्टी फ्रॉम लॉस इज नोन एज इंडेमनीफायर. एक पार्टी जो प्रॉमिस करती है दूसरी पार्टी से कि वो लॉस को
लॉस से उसको सेव करेगी, तो वो पार्टी कौन सी है? इंडेमनीफायर। उसको क्या कहेंगे? इंडेमनीफायर। वेयर एज जबकि द पार्टी हु प्रॉमिस टू बी सेव्ड अगेंस्ट द लॉस इज नोन एज इंडेमनीफाइड। जबकि जो पार्टी है जिसने प्रॉमिस करा हो, जिसको प्रॉमिस किया गया है कि वो सेव होगी अगेंस्ट द लॉस, वो इंडेमनीफाइड होगी या इंडेमनिटी होल्डर। उसको इंडेमनीफाइड भी कह सकते हैं, इंडेमनिटी होल्डर। So, in short, we can say indemnifier is the person, is the promisee, or the person who promises to save the other party from loss, while indemnified is who is promised to be saved against the loss. Is I guess your concepts are clear about indemnifier and indemnified. A may contract. Let's take another example. Example for contract of indemnify. A may contract to indemnify B against the consequences of any proceedings which C may take against B in respect of some rupees 5,000. A ने कॉन्ट्रैक्ट किया इंडेमनीफाई का बी के साथ. इंडेमनीफाई मीन्स ही विल सेव बी अगेंस्ट एनी कॉन्सिक्वेंसेस. जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगी जो सी प्रोसीडिंग्स करेगा अगेंस्ट बी इन रिस्पेक्ट ऑफ सम, जो उसने 5,000 एडवांस किए थे सी ने बी को, उसके अगेंस्ट में जो भी प्रोसीडिंग्स लेगा, वो ए ने कहा था कि आई विल सेव यू फ्रॉम दैट. In consequences, when B is called upon to pay sum of money to C fails to do so, जब भी B को बुलाया जाएगा कि वो 5,000 पे करे C को, तो she would be able, she able होगा मतलब योग्य होगा कि to recover the amount from A, अपना अमाउंट ए से रिकवर करने के लिए, एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 24. एज प्रोवाइडेड मतलब सेक्शन 125(4) में क्या गिवन है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. एज ए प्रॉमिस टू बी टू indemnify against any proceedings which C may take against B. So it is a example of contract of indemnity. Let's take another example. X, a shareholder of a company, lost his share certificate. He applied for the duplicate. The company agreed to issue the same on the term that X will compensate the company against the loss where any holder produces the original certificate. Here there is a contract of indemnity between X and the company. I guess you are clear about it. X जो कि एक शेयर होल्डर था कंपनी का, उसने अपना शेयर सर्टिफिकेट खो दिया. ही अप्लाइड फॉर द डुप्लीकेट. उसने अप्लाई करा डुप्लीकेट के लिए. द कंपनी अग्रीड टू इशू. कंपनी राजी हो गई इशू करने के लिए. द सेम ऑन द टर्म. इशू करने के लिए वो रेडी हो गई, बट उसने एक कंडीशन रखी दैट एक्स विल कॉम्पनसेट द कंपनी अगेंस्ट द लॉस. एक्स कंपनी को कॉम्पनसेट करेगा अगेंस्ट कोई भी लॉस हुआ अगर वेयर एनी होल्डर, किसी भी होल्डर ने उस ओरिजिनल सर्टिफिकेट के, किसी भी होल्डर के पास वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट पाया गया. है देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बिटवीन एक्स एंड द कंपनी. यहाँ कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हुआ एक्स और कंपनी के बीच? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. लेट्स टेक थर्ड एग्जांपल ऑफ दैट. सो एक्स एंड मे अग्री टू indemnify by for any loss or damage that may occur it if a tree on by neighboring property blows over. If the tree then blows over and damages by fence, X will be liable for the cost of fixing the fence. X एक इंडेमनीफाई मतलब एक इंडेमनी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के लिए अग्री हुआ बाई के लिए कि अगर एनी लॉस या डैमेज हुआ, एक ट्री जो था, इफ अ ट्री ऑन बाई नेबरिंग प्रॉपर्टी ब्लोज ओवर, अगर जो बाई की नेबरिंग प्रॉपर्टी के एक्स जो नेबर था बाई का, उसने बाई से कहा कि जो भी मेरी प्रॉपर्टी पे ट्री लगा हुआ है वो अगर आपके ऊपर गिरता है, आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर, और कुछ आपको डैमेजेस और लॉस करता है वो ट्री, देन आई विल कॉम्पनसेट और आई विल कवर दैट and I will be liable for all the damages. So here X will be liable for the cost of fixing over. अगर वो पेड़ गिर जाता है तो X will be liable. So here वो which contract? It's just a contract of indemnity.
So, what is analysis of that? To indemnify means to compensate or make good the loss. Thus, under the contract of indemnity, the existence of loss is essential. अगर हमें contract of indemnity बनाना है तो existence of loss का मौजूद होना भी बहुत ज़रूरी है कि it is not predictable that it will be happen, but एक वो होना चाहिए कि हाँ लॉस होना है, हो सकता है. So existence of loss is essential. Unless the promisee has suffered a loss, he cannot hold the promisor liable on the contract of indemnity. जब तक promisee जो जिसको लॉस और डैमेजेस जब तक नहीं हो जाते, promisee जो पार्टी है उसको लॉस नहीं हो जाते, he cannot hold the promisor liable. वो प्रोमिसर को लाइबल ठहरा नहीं सकता ऑन द कंट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी जब तक उसको लॉस और डैमेजेस नहीं हो जाते या वो सफ़र नहीं होता उससे, तो कंट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के लिए वो दूसरे पर्सन को लाइबल नहीं ठहरा सकता. However, the above definitions of indemnity restricts the scope of contracts of indemnity in as much as it covers only the loss caused by the conduct of the promisor himself or by the conduct of any other person. So, इंडेमनिटी की जो डेफिनेशन है वो रेस्ट्रिक्ट करती है स्कोप जो कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेफिनिटी एज मच एज इट कवर्स ओनली द कॉस्ट लॉस. जब मतलब जो लॉस है वो कारण किसका मतलब रीज़न होना चाहिए बाय द कंडक्ट ऑफ प्रोमिसर, या तो प्रोमिसर की वजह से या प्रोमिसर या कोई और पर्सन हो. थस loss occasioned by the conduct of the promise or accident or an act of God is not covered. अब for example earthquake आ गया या landslide हो गई, then nobody is responsible for that. So there is no contract of indemnity. So here it is up to some restrictions. Only when the promisor, just because of the conduct of promisor loss occur, then we can we can allow contract of indemnity. I hope you got better knowledge of contract of indemnity. Thank you guys. Please like and subscribe. Thank you.